Hello everyone. Welcome to Team Lex Luminate. Today we'll be discussing about decree and its types. So this will be a very detailed video, helpful for your examinations and all. So before starting and going into the topic, this is something about me. Myself, Swayam Raychoudhury. I am a practitioner at Odisha High Court and various other lower courts and tribunals as well. I did my integrated law in BBA LLB honors from Swa National Institute of Law, which is in Bhubaneswar, Odisha, and I am pursuing my LLM from PG Department of Law in Business Law, which is Utkal University, and I have appeared in Odisha Judicial Service Men's Examination. So now moving on to the topic, what is a decree? A decree होता क्या है? Decree जो है वो section 22 of CPC में defined है, which says decree means the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include, क्या नहीं include करता है, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, any order of dismissal for default. The explanation to section 22 says a decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final as well. तो जब भी आप ऐसे लंबे लंबे सेक्शंस पढ़ते हैं तो एक काम कीजिएगा, उसको इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड करना है. So what are the essentials we are deriving out of the section 22? Let us see. First of all, there must be an adjudication. So what is adjudication? Adjudication means a decision of the court. So judicial determination of the matter in dispute is known as adjudication. So adjudication को मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया है, तो adjudication याद रखिएगा आप. So adjudication क्या होना चाहिए? एक formal expression होना चाहिए. So what is a formal expression? Formal expression is something which is provided by the law. Law में दिया होता है, forms होते हैं, वो formal expression में लिखा होता है decree. So basically judgment के बाद ही decree आता है. सो सच एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन अ सूट. और ये क्या होता है? ये एडजुडिकेशन जो किया है कोर्ट ने, ये एक सूट में दिया होना चाहिए. तो जो सूट है वो सीपीसी में डिफाइन नहीं है. और यहाँ पे क्या होता है? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टीज होना चाहिए. तो क्या होता है? डिटर्मिनेशन जो होता है वो कंक्लूसिवली होना चाहिए. सो ये फाइनल डिटर्मिनेशन जब होता है उसको हम डिक्री बोलते हैं. तो अगर कोई पार्टी का फेवर में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर डिक्री के पेंडेंसी के दौरान होता है तो वो डिक्री नहीं माना जाता है एंड इट इज नॉट अपीलेबल टू. नाउ लेट अस सी व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्रीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर योर एग्जाम्स. देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ डिक्रीज. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, then partly preliminary partly final, then comes deemed decree. So preliminary decree होता क्या है? When an adjudication decides the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, but does not completely disposes of the suit. जब एक डिक्री कुछ राइट्स को डिसाइड करता है पर वो कंप्लीटली डिसाइड नहीं करता है एक पार्टीज के राइट्स को, तब हम उसको प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं. तो प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद भी एक फाइनल डिक्री फॉलो होता है. तो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर टू बी टेकन आफ्टर अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड एंड बिफोर अ फाइनल डिक्री कैन बी एक्चुअली पास्ड. सो एक्चुअल डिक्री जो होता है वो फाइनल डिक्री होता है. प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल डिक्री से पहले दिया जाता है. एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर 20 रूल 12 which says about suits for possession and mean profits. तो मीन प्रॉफिट्स के लिए जो कोर्ट आपको जो डिक्री प्रोवाइड करेगा वो प्रिलिमिनरी डिक्री होता है. फिर आता है फाइनल डिक्री. सो व्हेन a decree is final, it is said to be final when the adjudication completely disposes of the suit. तो अगर एक adjudication completely dispose of कर रहा है एक suit को, तो उसको हम final decree बोलते हैं. So there are basically two types of decrees when it can be said to be final. First one we have already discussed, when it completely disposes of the suit. The second one is when
Within the prescribed period of limitation, the party did not prefer any appeal. So when no appeal is filed against the decree, then the decree is said to be final. So within the period prescribed by limitation, you have to approach the higher forum for filing appeal. Otherwise, the decree will said to be final. Then comes partly preliminary and partly final. As you can see in the explanation and the last line, it is said that it may be partly preliminary and partly final as well. So decree can be partly preliminary, आधा preliminary हो सकता है, आधा final भी हो सकता है. So for example, in a suit for possession of immovable properties with mean profits, so जब एक mean profits के लिए जो सूट हुआ है उसके where the court decrease the possession of the property, डिक्री कर देता है पोजीशन के लिए, फिर डायरेक्ट करता है कि मीन प्रॉफिट्स जो है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए. तो फॉर्मर वाला जो है उस पे हम फाइनल डिक्री बोलेंगे, और जो सेकंड वाला जो ऑर्डर है जो इंक्वायरी के लिए बोला है वो प्रिलिमिनरी कहलाएगा, क्योंकि फाइनल डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट्स कैन बी ड्रॉन ओनली आफ्टर द इंक्वायरी. द फोर्थ टाइप ऑफ डिक्री इज डीम्ड डिक्री. सो द डीम्ड जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ये एक स्टैट्यूटरी फिक्शन क्रिएट करता है. So the word is creating a statutory fiction for extending the meaning of the word decree. So जो types of decree हैं उसको एक ये extension provide करता है. So rejection of a plaint is called a decree. This has been provided in the Bear Act as well. If you all have your Bear Acts, you can look at it. The two types of decrees are called deemed decrees. Rejection of a plaint is a deemed decree, and determination of any question under section 144 is also a deemed decree. रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट के बारे में आपको ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है, और सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी आपको रेस्टिट्यूशन के बारे में बताता है. नाउ मूविंग ऑन टू द लैंडमार्क जजमेंट्स. वेरी ऑफन सम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड दैट कैन more than one preliminary decree be passed, or can more than one final decree can be passed. The Supreme Court has laid down this and settled down the rule as well. In Fulchand versus Gopal Lal, Supreme Court held that there can be more than one preliminary decree. In Shankar versus Chandrakant, also the Honorable Supreme Court of India has said that more than one final decree can also be passed. So आपने डिक्री के बारे में समझा, डिक्री क्या होता है, डिक्री के टाइप्स क्या होते हैं. तो आइए जानते हैं डिक्री के कुछ इलस्ट्रेशंस क्या हो सकते हैं. So decisions which are decrees: order for abatement of a suit, dismissal for appeal as time barred, rejection of a plaint, order holding that there is no cause of action, order holding that appeal is not maintainable. So I have only given 5 examples. This is not exhaustive, there can be more examples as well. Now moving forward to decisions which are not decrees. Dismissal of appeal for default. तो अगर एक डिफॉल्टिंग पार्टी के अपील को अगर डिसमिस कर देता है कोर्ट वो, तो फिर वो सेट असाइड के लिए भी जा सकता है, इसलिए उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे. रिटर्न ऑफ ए प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू अ प्रॉपर कोर्ट, ये ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया गया है. ऑर्डर ऑफ रिमांड, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग रिलीफ. सो दीज आर ऑल the decisions which are not decrees. So I have given only 5 examples. The list is not exhaustive. There are many examples as well. You can do a thorough research on that also. And if you all have any doubts, you can ask in the comment section. तो जो डिक्री होता है वहाँ पे एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. तो जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं सेक्शन 104 रेड विथ ऑर्डर 43 रूल 1 में, वो डिक्री इंक्लूड नहीं करता है. और जो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, तो वो भी डिक्री के डेफिनेशन में नहीं आता है. So this was all about decree. Thank you everyone. Hope you like the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. This will give us more motivation to make more informative videos for you all. Thank you. Have a nice day.